Good evening, everyone. I hope I am audible and you all can see my screen. You can type a yes in the chat box in the webinar chat panel. Thank you so much. Let me first introduce you all. This is Sakshi from the StockEdge family. So today, basically, we will cover how to do long-term investment with the help of StockEdge feature. This session will be taken in both in Hindi and English. And first we will cover the equity side and then we will cover the mutual fund side. So if you have any questions related to any of the features which we will discuss today, please write in the webinar chat panel. So let's start. So as we can see, the dashboard of StockEdge. We will first discuss the investment ideas. So basically, these are the case studies which is developed by our team. You can see the edge score, spider chart, key levels, cap, and last rated price. Suppose let us take an example, Trend Limited. So basically, edge means the score, give us the score of how the company is performing. When we click on the key level, so we can see the red zone and the green zone. The red zone shows us that this is a distribution phase and the stock prices has reached its state where we can book the prices. And the green one is the accumulation state. Here we can buy the stock. This is a fundamental side. For trading intraday, you can join our technical session. You can contact our customer team for that. So, see, the cap, suppose the Dania Bharat. Here we can see the stock prices has reached its accumulation state. So, we can decide that we can buy the stock at these levels. Now, let us come to edge reports. So, these are reports which are developed by our fundamental team. So, we have case studies, con-call analysis, infographics, IPO notes, and stock to watch. So, con-call analysis में मतलब जो भी अभी जैसे क्वार्टरली आपका अर्निंग कॉन्कॉल्स ये सब होता है तो हम लोग की टीम पूरा प्रिपेयर करते हैं कॉन्कॉल रिपोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज का ये अर्निंग कॉल है of Q2 FY25. So according to our team, the outlook for this company is positive. And for full details, you can see the view report. IPO notes. So basically, whatever IPOs are upcoming, और जैसे अभी आप एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का IPO चल रहा है तो आप उसके डिटेल्स बारे में इसमें जान सकते हो हम लोग की टीम ने इसका आउटलुक एवरेज दिया है and for more details you can click here on the IPO notes to know further that about the business of this company, what are the fundamental parameters and everything. Then let's come to investor portfolios. So investors portfolio में हम लोग का
जैसे राकेश चुनचुनवाला, ही इज द बिग फोर ऑफ द इंडियन मार्केट। तो बेसिकली उनके पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहता है कि वो कितना स्टॉक्स होल्ड किए हुए हैं, क्या की चेंजेस किए उनके पोर्टफोलियो में। जैसे उनका हाईएस्ट शेयर होल्डिंग है एप्टेक में। करंटली उन्होंने नसारा टेक्नोलॉजीज में अपना स्टेक लेस किया है। उनके सेक्टर का एलोकेशन क्या है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने डायमंड एंड ज्वेलरी में ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। उनका अलग अलग कैप क्या क्या एम कैप एलोकेशन है। लार्ज कैप में 40% अराउंड उन्होंने एलोकेट किया है। तो वैसे ही पूरे डिटेल्स आपको इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। नाउ लेट अस कम टू इन्वेस्टमेंट थीम्स। सो बेसिकली जैसे अभी आपका गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहा है, तो कौन कौन सा स्टॉक्स उस पर इफेक्ट हो सकता है उसका हम लोग को पूरा लिस्ट मिल सकता है। जैसे दी साइनिंग मैटर गोल्ड स्टॉक्स में जाके, तो इफ there's any fluctuations in the gold prices, then the stocks can be affected. We can see the changes in the day, weekly, monthly, 3 monthly, and so on. Whatever news are there in this company can be shown from here. एच रिपोर्ट में इन स्टॉक्स के ऊपर कुछ कवर किया हुआ है, वो हम लोग को इस टैब में मिल जाएगा। और कुछ अपडेट्स या टिल है वो भी। नाउ लेट अस कम टू कंपनी फाइलिंग्स। इसमें जैसे कोई कंपनी ने अपना बोनस या डिविडेंड या न्यू ऑर्डर सेबी के साथ फाइल किया हुआ है, तो उसका डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे डिविडेंड, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन कंपनी ने रिसेंटली सेबी के साथ फाइल किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। You can click here and get the full details of the filing. Any questions? If you have any questions, please type in the webinar chat panel. Hmm. I don't think there are any questions yet. So let us continue. So ये आपका इक्विटी साइट में हो गया कि आप कैसे स्टॉक एज के फीचर्स को यूज करके आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो। Now let us come to the mutual funds section. So basically this is the mutual fund dashboard. यहाँ पे आपको जो भी बेस्ट 5 टॉप म्यूचुअल फंड्स है वो आपको दिख जाएंगे। जैसे ETF इंडेक्स के बेस्ट मोतीलाल ओसवाल PSE NH फंड है। स्मॉल कैप फंड में आपका बंधन स्मॉल कैप फंड है। वैसे ही आपको सारा यहाँ पे दिख जाएंगे। So let us come to the AMCs.
AMCs are usually the asset management company. StockEdge में SBI म्यूचुअल फंड, इनका AUM सबसे ज्यादा है, तो दिस इज लिस्टेड फर्स्ट। वैसे ही पूरा लिस्ट होकर अकॉर्डिंग टू दी AUM आपका लिस्ट आ जाएगा। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो SBI म्यूचुअल फंड में क्या क्या फंड्स है उसका आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। इक्विटी में कौन सा फंड्स है, डेब्ट्स में कौन सा फंड्स है, हाइब्रिड में कौन सा फंड्स है, और ETF और ये सब यहाँ पे अदर में लिस्टेड है। यहाँ पे आपको AU का डिटेल्स मिल जाएगा और NAV अपडेटेड EOT, तो वो सब भी डिटेल्स मिला है। यहाँ पे आप वीकली, मंथली और क्वार्टरली क्या रिटर्न है उस फंड्स का यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो SBI म्यूचुअल फंड का आपको यहाँ पर पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या AUM है, ये लोग कितना नंबर ऑफ स्कीम्स होल्ड किए हुए हैं, की पर्सन कौन देख रहा है फंड्स एंड AUM। नेक्स्ट चलते हैं म्यूचुअल फंड क्लासेस। तो इस सेक्शन में आपका क्लासेस डिवाइड किया हुआ है, जैसे लार्ज कैप फंड्स कौन सा है, मिड कैप फंड्स कौन सा है। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या लार्ज फंड है, जैसे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो इस फंड का आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि अभी NAV का यहाँ पर चार्ट है कि 2022 में NAV क्या था और अभी क्या NAV है। प्रेजेंटली 86 यहाँ पे NAV है इस फंड का। इस फंड के का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या कब ये स्टार्ट हुआ था, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, SIP कितना का हो सकता है, क्या एक्सपेंस रेशियो है, क्या एक्सिट लोट है। आपको यहाँ पर सारा डिटेल्स, क्या पैरामीटर्स है जो देखना चाहिए आपको व्हाइल इन्वेस्टिंग इन दी म्यूचुअल फंड, कौन सा एसेट टाइप है, एक्सेट्रा सब मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग के टीम में क्या स्कीम रिस्क है और इस फंड का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे NAV का क्या परफॉर्मेंस है, वी कैन सी कि 1 ईयर में इस फंड ने 35% जनरेट किया है। इस फंड का होल्डिंग क्या क्या है, डोमेस्टिक इक्विटी क्या है एंड अदर एसेट्स। AUM, इस फंड में AUM इंक्रीज हुआ है कि नहीं, आप 1 ईयर का देख सकते हो। इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है, तो इनका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है और क्या क्या रेशियोज है, बेटा, कोरिलेशन, एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम हियर। So now let us come to the fund managers. यहाँ पे सारे फंड मैनेजर्स के नेम्स एंड डिटेल्स दिए हुए हैं, जैसे रवि प्रकाश शर्मा, ये कौन सा फंड्स मैनेज कर रहे हैं, एंड यहाँ पे ओवरव्यू में उनका नेम, डिटेल्स, एक्सपीरियंस, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे हम लोग का इन्वेस्टमेंट थीम्स था, वैसे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट थीम्स है। Suppose if you are looking for tax saving investment funds, then you can click on this category and see in which schemes you can invest. So Aditya Pila ELS tax saving fund, these are all are tax saving investment funds.
यहाँ पे हम लोग ने वीडियो भी रखा है कि हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इफ यू वांट टू सेव टैक्स। AUM एनालिसिस। सो बेसिकली यहाँ पे आपका इक्विटी डेब्ट हाइब्रिड का AUM इंक्रीज हुआ है कि नहीं, ये पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, क्लास वाइज आपको मिल जाएगा। So NFOs. So basically, these are the new funds which are offered to the public. These are the upcoming NFO. आप क्लिक करोगे इसमें तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, क्या एग्जिट रोट है, कितना मिनिमम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन पैरामीटर्स क्या है, कौन मैनेज कर रहा है इस फंड को, इस फंड का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रिस्क है, ऑन गोइंग अभी क्या क्या NFO ऑन गोइंग है उसका यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप कोई भी स्कीम में क्लिक करोगे तो आपको पूरा कितना लमसम कर सकते हो, क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्या एक्सिट रोट है, रिस्क रेटिंग इज वेरी हाई, you will get all the key parameters here, also the objectives. So recently ये सब फंड्स लिस्टेड हुए हैं। ये आपका 3 मंथ्स का डेटा है यहाँ पे कि वो लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इक्विटी डेब्ट हाइब्रिड, ये सब सारे क्लासेस का भी पूरा स्कीम डिटेल्स मिल जाएगा। तो क्या क्या पूरा लिस्ट ऑफ कस्टडियंस एंड रजिस्ट्रार्स। सो इंडिया में 2 ही म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार्स है, कंप्यूटर एज एंड केफिन टेक्नोलॉजीज। So if you have any questions related to mutual funds or equity, please let me know. Please write in the webinar chat. So नितेश जी ने पूछा है how to analyze any mutual fund with help of ratios on StockEdge. Suppose let us take an example. जैसे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स है, आप की पैरामीटर्स में जाओगे तो यहाँ पे इनका एम कैप, पीई रेशियो, पीपी रेशियो, पीटीआर डिवाइड लिखा हुआ है। आप क्लिक करोगे इसमें पीई, तो प्राइस अर्निंग रेशियो ये सब क्या है, पीपी क्या है, ये सब सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है इनकी की पैरामीटर सेक्शन। आई होप दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड। Akshay Agarwal, which is the best mutual fund? Hi Akshay, here we are discussing only about the StockEdge features. If you have any questions related to mutual fund, you can ask in StockEdge social in the mutual fund club. पापा साहेब ने पूछा है म्यूचुअल फंड का डेट महीने की कौन से डेट को अच्छा रहेगा। तो यूजुअली पीपल इन्वेस्ट many people invest at the beginning of the month and many people invest at the end of the month depending on their salary and all. तो वैसे कुछ
वो आपके ऊपर है कि आपको बिगनिंग में इन्वेस्ट करना है कि लास्ट ऑफ द मंथ में इन्वेस्ट करना है। मीन्स अक्षय ने लिखा है मीन्स हाउ टू इन्वेस्ट विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो आप देखिए वो आपका क्या इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है। आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या मीडियम रिस्क टेकर हो। there are many parameters which you need to decide. So आपको पहले अपना set of parameters decide करना पड़ेगा, then only you can decide which is the best mutual fund. um, any more questions? म्यूचुअल फंड में स्टॉक स्प्लिट के एनएवी ऐड होते हैं क्या? लाइक आई हैव सेड दैट यहाँ पे हम लोग सिर्फ फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। आप एनी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस म्यूचुअल फंड क्लब में आप पूछ सकते हैं। आपको कुछ फीचर के बारे में पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। नितेश जी ने क्वेश्चन किया है, मैम एज पर ऐसी केस स्टडी trend for 20 out of 30 but now it is overvalued. How StockEdge help us to get position for long term? So let us come to the case studies. नितेश जी यहाँ पे की लेवल्स लिखा हुआ है। So basically you are right that trend is overview. So हम लोग के StockEdge में की लेवल ये रेड जोन ने कहा है कि yes it is overvalued and you should reduce or book profit at this level. And यहाँ पर आप ग्रीन जोन देख रहे हो, यहाँ पे this zone is for accumulation. So whenever the prices reaches this zone, you can accumulate again. Like accumulation zone is the good zone for buying these stocks. I hope Nitish, your question got answered.
Thank you, Nitesh ji. Wish you happy 30th. Any more questions? To Yashwant, EMA can be changed. It's Are you talking about the exponential moving average? Shrikant, she यशवंत जी ने शायद यस कहा है. तो basically we are discussing only the fundamental part. For any technical query, please join the technical session. Uh, again, define trading strategies features. सर ये हम लोग के टेक्निकल सेशन में डिस्कस होता है. तो आप कस्टमर डिलाइट टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो कि वो सेशन कब है और आप देन ज्वाइन कर सकते हो. तो नो अबाउट दैट फीचर. विच पापा साहेब ने पूछा है विच सेक्टर्स गुड टू बाय इन अंडर परफॉर्मिंग मार्केट. सर आप ये क्वेश्चन हमारे फंडामेंटल क्लब में पोस्ट कर सकते हो. यहाँ पे सिर्फ फीचर से डिस्कस हो रहा है. मैम हाउ टू यूज क्लब श्रीकांत जी ने कहा है. सर आप प्लीज हमारे कस्टमर डिलाइट टीम से कांटेक्ट करिए, वो आपको पूरा समझा देंगे. शिवा अग्रवाल जी ने लिखा है हाउ कैन वी evaluate through StockEdge app which mutual fund is good. तो जैसे मैंने दिखाया कि आप कोई भी फंड में जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे आरटीटी बिरला एसएल मीडियम टर्म प्लान, आप इनका एनएवी का परफॉर्मेंस देखो. आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कब इंसेप्शन हुआ था, क्या आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. देखिए आपको 1 मंथ में ये 23% दे रहा है ये फंड. तो आपको क्या रिटर्न्स मिल रहा है 1 ईयर 1 वीक 1 मंथ सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा. फंड मैनेजर जो फंड्स मैनेज करे उनका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, क्या क्या रेशियोज है वो सब मिल जाएगा. और आपको कुछ भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेरी है आप म्यूचुअल फंड क्लब में पोस्ट कर सकते हो. अक्षय जी प्लीज HDFC बैंक के बारे में आप फंडामेंटल सब में पूछ कीजिए. We are only here to discuss the features of StockEdge. Do we have a weekly EMA of 10, 20, 50 weeks scan in the app? Chadesha ji, आप please
टेक्निकल सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। आप हमारे कस्टमर टीम को कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि ये कब सेशन होगा। So sector rotation is covered in our another session. Customer delight, please contact customer delight for that. संतोष जी, यहाँ पे हम लोग कुछ टेली कॉल्स या कुछ वैसे देते नहीं है। So StockEdge is an analytic app, so you can research about companies and mutual funds here. अक्षय जी ने पूछा which is the features where I can see which stock is performing good. Okay. तो सर जैसे मैंने आपको केस स्टडीज वाला सेक्शन दिखाया था इन्वेस्टमेंट आइडियाज में, उसमें आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स एंड ऑल। आपको एच स्कोर से पता चल जाएगा कि वी स्टॉक इज परफॉर्मिंग गुड। Sir, Santosh ji, here we only discuss about how to use StockEdge features in order to take long-term decisions. Here we don't take and give any daily calls. Any more questions? So let's any more questions related to any form? अच्छा, मोहम्मद साहिद जी ने questions किए from Edge report. Can we invest or they are just for educational purpose? Sir, mainly these are the research reports. So if you want to invest, it's your decision. सोनम मनसुख जी ने पूछा कि क्रॉसिंग accumulation level, it can go only upward or downward can happen. सोनम जी, accumulation, हाँ आपको चार्ट दिखा। So basically this is data pattern chart. तो आप देख सकते हो पहले accumulation zone से प्राइस ऊपर के एंड फिर वापस नीचे आया। सो प्राइस आपका ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो right time to buy the stock is when the stock prices has reached its accumulation zone. Please tell features of investment ideas, please again. Sir, this has already been discussed. You can see the recording again.
The recording is available in the StockEdge Club, or you can contact the customer directly. The StockEdge have screener to filter stocks based on custom filters. Sir, here we have a set of scans, like the technical scans, fundamental scans. So accordingly, you can use this scans. You can also create a combo scan. So you can custom the scans which are available in the StockEdge according to your criteria. Thank you, Santoshi. About Dora Electric. So here we are only discussing about StockEdge features. No stock recommendation, please. If you have any question related to a particular stock, you can post in the class. Piyush, you can post this question in the fundamental club. They will research about it and tell you what to do. यशवंत ने पूछा है in fundamental which are the points we have to look mostly. So let us take an example of any company. Let us say Reliance. तो फंडामेंटल में आप फंडामेंटल के टैब आप खोले, वहां पे पूरा इंडिकेटर एन और है कि ईपीएस क्या है, पी करंट पीई क्या है, financials, whether the company is growing or not, आपको बैलेंस शीट से पता चल जाएगा. कैश फ्लो इस दी कंपनी इज परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली. आप स्कैन्स भी यूज कर सकते हो. ये प्रमोटर इसमें क्या कितना शेयर होल्ड कर रहा है, पब्लिक क्या कर रहे हो, इस कंपनी में बिग बोस कौन कौन ने इन्वेस्ट किया है, कौन से म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया. आपको सारे डिटेल्स अबाउट द फंडामेंटल पैरामीटर्स इसमें मिल जाएगा. Also, if you have any fundamental or technical conceptual based question, you can ask in our Learn to Trade and Learn to Invest clubs. Piyush ji, please ask in the club about specific stocks. Any more questions related to StockEdge stand features?
Let's wait for 5 more minutes, then we can close this session. हाउ टू इन्वेस्ट टेक्निकल प्लान। सर हमारा जैसे आज फंडामेंटल एंड म्यूचुअल फंड का सेशन है, वैसे ही हम लोग का टेक्निकल सेशन भी होता है टू डिस्कस अबाउट द टेक्निकल फीचर्स. You can contact our customer team to ask details of that session and then ask them. Thank you, Piyush ji. Happy Diwali. Thank you, Piyush ji. Ma'am, how to check stock upcoming research? तो आप हमारे न्यूज एंड अपडेट सेशन में जाओ, तो रिसर्च में आप देख सकते हो अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस या इवेंट्स देख सकते हो. Also, you can type the name of the stock, Reliance Industries. अपडेट्स में आपको मिल जाएगा any announcement, corporate action sheets. Happy Diwali, Asif ji. Since no more questions are coming in, we will close today's session. Thank you for attending. I hope this session will help you in making better long-term investment decisions. And is it only for Indian stock? Yes, Santosh ji. This is only for Indian stocks. Uh, Currently, we don't have any plans to support global stocks. Since no more questions are coming,
we can close where I can find ETF details. Sir, you can go into mutual fund section. वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड क्लासेस में जाओ. यहाँ पे आपको ETF यहाँ पर इंडेक्स क्लिक करो तो सारे ETF के बारे में आपको मिल जाएगा. Santosh ji, I hope your question got answered. Thank you, Santosh ji. Wishing you happy Diwali. Lalita ji, can you please ask your question again? I'm not able to get your question, Lalita ji. Can you please type again? Okay, so how to select multiple sector in compost scan? सर आप मल्टीपल सेक्टर्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो. आप सिर्फ हम लोग का प्री डिफाइंड स्कैन्स में का आप कॉम्पो स्कैन्स बना सकते हो. Dashi, I hope your question is answered. Since no more questions are coming in, I will be closing today's session. Thank you so much for everyone who joined, and happy Diwali, everyone.